Student, welcome back again to this part 4 of the statistic. In previous videos, we have seen ungrouped frequency distribution, mean, median, mode, range, frequency, and other things. Now, directly we'll come to the part that is exercise 14.1, which is very easy exercise in this chapter. So, very first question of this 14.1 is that give few examples of the data that you collect from your day-to-day life. Very basic and simple question, students. Any 5 example of the data that you collect from your day-to-day life. So many examples you can give, not only 5. So only 5 I have chosen. 5 examples of the data that we can gather from our day-to-day lives are number of students in the class, just like number of fans in your class, electricity bill of your house for last 2 years, that particular amount for last 2 years, for the month of January, February, March, April, and so on. For last 2 years you can collect the data. Then election results obtained from TV or newspaper. Okay, whatever it is, that data you can collect for which party has gained which, how many votes. Study hours per day in a last month, how many hours you have studied in last month per day. That hours you can write. Just first of like July you have studied for 1 hour, 2nd of July you have studied for 2 hours, 3rd of July you have studied for 1.5 hours. Like that you can collect the data. Not only this much, but there are the many ways where you can collect the data. So the very basic question this was asked to you, that give the 5 examples of the data that you can collect from your day-to-day life, and these were the examples that we can give. It is not necessary that you can give these examples only. You can put your own examples also, but make sure that it is related to that your data collection only. Okay. Now let's come to the question second. It is again based on the question number 1. They are asking you that classify the data in question 1. Classify data in question 1 as a primary or secondary data. Now what is primary data and what is secondary data? So let me clear you what is primary data and secondary data. The information collected by the investigator himself or herself with a definite objective in his or her mind is called as primary data. जो डाटा हमने खुद से कलेक्ट किया होता है, कुछ एक ऑब्जेक्टिव रख के माइंड में कि मुझे इसको आगे इस चीज़ के लिए प्रोसेस करना है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा. तो जैसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ये आपने खुद कलेक्ट किया हो, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने क्लास में खुद जाके गिने हुए हैं. तो दिस इज योर ओन कलेक्शन ऑफ द डाटा. जैसे सेकंड में नंबर ऑफ फैन इन योर क्लास, दिस इज अगेन योर ओन कलेक्शन ऑफ द डाटा, क्योंकि आपने खुद जाके गिने हुए हैं क्लास में. सो दिस डाटा इज कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा. अगर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक बिल ऑफ योर हाउस ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स, ये आपने खुद के अपने लास्ट 2 ईयर के घर में से बिल निकाले और उसके खुद के डाटा आपने कलेक्ट करके लिखा. जनवरी में इतना बिल आया था, फरवरी में इतना आया था, मार्च में इतना आया था, अप्रैल में इतना आया था. तो ये खुद आपने एक अपने पर्पस के लिए इसको कलेक्ट किया हुआ है, ताकि अगले बार मैं इस बिल को कैसे रिड्यूस कर सकूँ. हो सकता है ये आपका पर्पस हो, या तो अगर आप एवरेज बिल निकालना चाहते हो, साल का कितना आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा होता है, उसके लिए आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है. ये डाटा आपने कहीं से नहीं लिया, आपने खुद ने इसको कलेक्ट किया पिछले 2 साल के बिल निकाल के, इसलिए हम इसको भी हम प्राइमरी डाटा कहेंगे. और जैसे इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर, ये आपने नहीं निकाले हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है. ये रिजल्ट आपने नहीं निकाले हैं, ये रिजल्ट किसी मीडिया ने अपने आपके लिए पब्लिश किए हुए हैं, वहाँ से आपने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है. तो ये आपके लिए प्राइमरी डाटा नहीं होगा, इसका सोर्स कहीं और है, चाहे इंडिया टीवी है, चाहे गवर्नमेंट